अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 25, चैप्टर नंबर 2, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है 2.1। द क्वेश्चन इज 3 children were burned in a government hospital on Sunday. Find the probability distribution for the number of girls. हमारे पास 3 चिल्ड्रंस हैं, एक हॉस्पिटल में है। 3 चिल्ड्रंस जिनकी बर्थ हुई है ऑन संडे, वन डे पर 3 चिल्ड्रन। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर? फर्स्ट ड्रॉ द सैम्पल स्पेस। वी हैव 3 चिल्ड्रन। बाय ट्री डायग्राम you can easily construct girl and boy, 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 and the girl and boy. Clear? अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सैम्पल स्पेस हमने कंस्ट्रक्ट करना है। गर्ल 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 बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल एंड बॉय बॉय गर्ल, बॉय बॉय बॉय. You can easily construct by the sample space by tree diagram and this one is boy boy girl and boy boy boy. Clear? First we construct the sample space. Number of sample point is equal to 2 power 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Clear? 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 sample points. अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। फर्स्ट डिफाइन द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो हेयर द गर्ल्स आर 3, हेयर द गर्ल्स आर 2, here the girls are 2, here the girl is 1, here the girl is 2, here the girl is 1 and also 1, and there is 0. Means x equal to 0, 1, 2 and 3. By first construct the table of the probability distribution. Clear? The table of the probability distribution. Probability distribution of x. What is x? X represent the number of girls. Clear? So x represent the number of girls. So x p of x. What is x? X is 0, 1, 2 and 3. So the probability of x is 0 is repeat how many time? Only one time. Total sample space, sample points in sample space is equal to 8. 1 divided by 8. 1 is repeat how many time? 1 is repeat 3 time. 3 divided by 8. 2 is repeat how many time? 2 is repeat 3 time. 3 divided by 8. And what is 3? 3 is repeat 1 time. 1 divided by 8. So the sum of all the probability is always equal to 1. So 3 plus 3, 6, 6 plus 7, 7 plus 8. 8 divided by 8 is equal to 1. So this is the probability distribution
we construct it by table. So we construct by in table form the probability distribution of x. X is the discrete random variable, so the number of girl is the discrete. So here the x is 0, 1, 2, 3, and the probability is 1 by 8, 3 by 8, and 3 by 8 and 1 by 8. The sum of all the probability is always equal to 1. सो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हमने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने टेबल बनाना था और इस टेबल में हमने इसको रिप्रेजेंट किया. थैंक यू.